Welcome back, guys. I'm getting reflection and refraction of light question 1, paper 2, 5054. Before starting, ये जो पांच पेपर्स हैं, you can buy them और आप मुझसे पूछ सकते हो इंक स्क्राइब पे। इंक स्क्राइब 1 है, इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हो डिटेल्स और आपकी तरफ मैं शिप करवा दूंगा और this will be a very easy process. The same exact past papers will be provided to you so that you can do it simultaneously with me. So I think that would make it a whole lot easier for you. So yeah. Question 1. Figure 5.1 shows light in air incident on the light of a rectangular glass block at an angle of 60 degrees. This is a 60-degree angle. The refractive index of glass is 1.6. The light travels in the glass and is incident on site xy at P. So xy at P. फिर से वही incident. So underline all the terms that describe a wave of light. First of all, it is transverse and it is electromagnetic, as you guys should already know. ठीक है ना? Very easy concept this is. You just have to remember it. Anyways, आगे. B. At the point where the light enters the glass, the angle of refraction is R. Calculate R. तो हमने इसके लिए क्या यूज करना है? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? I have put it in front of you. आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है in order to find what the R is. Refracted angle. Angle of refraction जो भी आप कहना चाहते हैं. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. N is 1.6 is equals to sine I. I will be the 60-degree angle. Sine I divided by sine R. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने साइन आर को वो बना देना है, व्हाट डू यू कॉल इट, सब्जेक्ट बना देना है. तो साइन आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. साइन आर विल बी इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइडेड बाय 1.6. ठीक है ना? साइन 60 कर लेते हैं. साइन 60 डिवाइडेड बाय 1 आप अपने कैलकुलेटर्स में कर लें. तो दैट विल गिव अस 0.54. साइन आर will be equal to 0.541. लेकिन this is not the complete answer. R यहाँ साइन यहाँ R से वो हो रहा है लेकिन दूसरी साइड पे जाके it will inverse, right? तो साइन इनवर्स तो 0.541 will give us an answer of, let's check, sine inverse 0.541 will give us an answer of R is equals to 32.75. And if we round it off, we'll get R is equals to 33. So very simple question. 2 marks का question है, 2 free के marks. You just have to know how to extract the information out of the question. अच्छा, this is the answer. Calculate the critical angle for the light traveling in the block. Critical angle का formula क्या होता है? N is equals to 1 by sine C. Sine C is the critical angle. I mean C is the critical angle, N is the refractive index और हम पहले critical angle को subject बना लेंगे because that's what we have to find. तो N है 1.6 is equals to 1 divided by sine C. साइन सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 1.6 वहां मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1 divided by 1.6. तो 1 divided by 1.6 is 1 divided by 1.6 will give us, एक से इस पे कर लेते हैं. 1 divided by 1.6 will give us 0.625. Sin C is equals to 0.625. अच्छा, आप C अगर हम यहाँ करते हैं कैलकुलेट तो साइन इनवर्स 0.625 and this will give us the critical angle.
So the angle is approximately 38.7. But if we round it off, mazid, so we'll get 39. So 39 is the angle. 39 degrees, of course, but they have mentioned the symbol. Acha, at P, the angle theta between the ray and the normal is given by 90 minus r. State and explain what happens to the light when it is incident on the side xy. अच्छा, first of all, we have found this angle. What this angle is के हमने निकाला था अभी. It is 33. 33 is the angle. अगर हम इसको एक्सटेंड करें और हम ये कर दें इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो दिस विल ऑफ कोर्स बी अ राइट एंगल, राइट? तो अगर हम 90 180 minus 90, which is this angle, and minus 33, which is that angle. So we'll get 57. So 57 will be the angle of this angle. This will be the angle of 57. So as we all know, in the denser medium, when the angle of incidence is larger than the critical angle, what happens is total internal reflection. जब भी एक denser medium में the angle of incidence is larger than the critical angle, total internal reflection happens. So angle of incidence given as 57, theta greater than the critical angle, so that internal reflection. Very simple question. अब आप ये बात दिमाग में बिठा ले. थीटा, when theta greater than critical angle, internal reflection, total internal reflection will occur. ठीक है ना? So that's about it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.